इसको नहीं देने से क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का, दिस पार्ट सीएसएस मीडिया क्वेरीज, नन ऑफ देम विल वर्क। ओके, ये जो हम लोग सीखेंगे, दिस वन, दिस सेकंड वन, दिस विल नॉट वर्क अंटिल एंड अनलेस यू ऐड दिस लाइन। सो इस लाइन को ऐड करने से क्या होता है, ब्राउजर का मतलब प्रॉपर विंडो साइज कैलकुलेट होता है, ठीक है। अदरवाइज कैलकुलेट नहीं कर पाता है सीएसएस। सो यू हैव टू टेल द ब्राउजर दैट इट्स विड्थ विल बी इक्वल्स टू द डिवाइस विड्थ, तो डिवाइस का स्क्रीन साइज का विड्थ के समान होगा। सो यू हैव टू टेल लाइक दिस, ओनली देन इट विल इनिशियलाइज, ठीक है। इसको व्यू पोर्ट बोलता है। जैसे व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट, हम लोग ने थोड़ा सीएसएस में स्टडी किया था ना, तो इट्स कॉल्ड व्यू पोर्ट, द प्लेस वेयर द वेबसाइट इज displayed, ओके, इन द ब्राउजर। जहां वेबसाइट हम लोग का रेंडर होता है उसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। सो यू हैव टू ऐड दिस लाइन। ये फर्स्ट स्टेप तो सबको समझ में आ गया ना, दिस वन। Then you have to add one meta tag. Okay. There are other meta tags also. We'll come to that later. For now, just you have to add this meta tag. हाँ. तो इसमें any confusion questions इसमें step one. वो कोड कहाँ पे मिलेगा जो ये मेटा व्यू पोर्ट वाला, या इसको मिलेगा if you search on Google. Suppose W3 schools में भी है how to do responsive web design. ऐसा सर्च करो तो HTML responsive web design देखो, इसमें W3 schools का ये मुझे लिंक मिल गया सपोज, ठीक है। इफ आई स्क्रॉल डाउन, इधर उन लोग भी बोलेगा द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू ऐड दिस, ओके, इन ऑल द एचटीएमएल पेजेस, जहां जहां पेज में तुम लोग यूज करोगे, you have to add this meta name equals to viewport, content equals to width equals to device hyphen width, and initial scale equals to 1.0. just ये लाइन को दे देना, हाँ, मिलेगा, इसको मिलेगा whenever you search for any guide on how to do responsive web design, okay, any guide you search on how to do responsive web design, so you will find this line, okay, you should find this line because without this it doesn't truly become responsive, ठीक है। इसमें नहीं दिया है but without this फोन में नहीं होगा, responsive नहीं होगा, ठीक है। so from experience I am telling you, so this step is must, okay, mandatory, it's mandatory। so ये तो कोई confusion नहीं है ना, so let us move to the next step, ठीक है। just paste this inside the head tag, opening and closing head tag। so now अभी ये सेकंड वाला है CSS मीडिया क्वेरीज। सो ये जो सिंटेक्स है ना, दिस सिंटेक्स एट दिस एट सिंबल मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ, सो दिस सिंटेक्स इनसाइड विच वी राइट आवर CSS सिलेक्टर्स, सो दिस इज कॉल्ड मीडिया क्वेरी। हाँ, इसको हम लोग मीडिया क्वेरी बोलते हैं। नो नीड टू स्टडी डीप ऑन दैट, ओके, यू जस्ट नीड टू नो एनफ, जितना चाहिए उतना एनफ होने से सफिशिएंट है, बिकॉज हम लोग का वेब डेवलपमेंट में बहुत सारा टेक्नोलॉजी होता है। एवरी टेक्नोलॉजी इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी सो मच डीपली, ओके, देयर आर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ related things in web development, ठीक है। so many technologies you have to come across, you have to know them, ठीक है। so just know that it's called media query, हाँ, ये वाला at media screen, so this much itself knowledge we need because we don't use more than that। so although there are other syntax related to media like at media print, ऐसा कुछ कुछ होता है, मैंने देखा है, but we have never used them, ठीक है। in extremely rare scenarios you may require them, and for that you have the documentation always available, so you don't have to worry on that, ठीक है। तो इसको हम लोग को यूज करना पड़ता है, इसको बोलते हैं CSS मीडिया क्वेरी। सो यूजिंग दिस सिंटेक्स व्हाट वी कैन डू, सो यूजिंग दिस लेट मी राइट, यूजिंग दिस वी कैन अप्लाई different CSS selectors to different screen sizes, ओके। मतलब सपोज मुझे मोबाइल्स के लिए वो वाला सिलेक्टर अप्लाई करना है, या फिर ये तीन सिलेक्टर्स हम लोग को फोन के लिए अप्लाई करना है, देन वी हैव सपोज से अदर थ्री सिलेक्टर्स व्हिच हैज टू बी अप्लाइड ओनली फॉर डेस्कटॉप। इन दिस वे यू कैन सिलेक्टिवली सिलेक्ट, ठीक है, मतलब सिलेक्टिवली तुम लोग कौन कौन सा CSS सिलेक्टर को यूज करना चाहते हो फॉर ए पार्टिकुलर स्क्रीन साइज, यू कैन सिलेक्ट देम, ओके, यू कैन टेल दिस CSS, ठीक है, कि मुझे ये सिलेक्टर लाइक दिस वन एंड दिस वन आई नीड टू यूज फॉर ऑल द स्क्रीन साइजेस बिलो 500 पिक्सल, ओके, सो यू कैन टेल लाइक दैट। So we have two variations, एक है mean width लिख सकते हो और max width भी लिख सकते हो, I am showing you in a second। So you can first you need to write at media like this, at symbol media, then screen, and then between parentheses, okay, function जैसा है, between parentheses you have to tell the max width। So I can say max hyphen width, yes we have already studied max width, so max width is a property in CSS, क्या होता है उसमें maximum limit देता है, ठीक है। suppose we have some element, okay,
एंड द एलिमेंट में एक्सपैंड, सपोज से इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, या फिर जैसे बटन हो सकता है, तो वी कैन अलाउ द एलिमेंट टू एक्सपैंड बाय यूजिंग मैक्स विड्थ, but it will not expand beyond that max width limit. तो here also it is similar. Maximum width 500 पिक्सल मैंने दिया है, इसका मतलब इसके अंदर बिटवीन दिस ब्रेसेस, ओके, ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस, बिटवीन दिस ब्रेसेस जितना भी हम लोग का सिलेक्टर्स रहेगा ना, दिस विल ओनली वर्क until 500 pixels, okay, maximum 500 pixel तक काम करेगा. So all those devices, tablets, phones, they have mostly they have less than 500 pixels, but if the screen size is greater than 500 pixels, okay, the total screen size, the window size, width basically width, अगर 500 से ज्यादा होगा तो ये सारा कोड अप्लाई नहीं होगा. Okay, very simple. All this code inside this opening and closing brace, they will not be applied, okay, beyond 500 pixels. So you can specify any value, not only 500, I can say 300, I can say 400, okay. So you can specify the width, okay. So first you have to write at media screen and between this parenthesis you can specify. Now instead of maximum width, इसके जगह हम लोग min width भी दे सकते हैं, min width. So when we apply min width, the logic is in reversed, ठीक है. So it applies the CSS code above the given minimum width, ठीक है. So here in the example below, the CSS selectors will only work for those screen sizes which are greater than 500 pixels. ठीक है. Let me also highlight this with a different color. Here in the example below, the CSS selectors will only work for those screen sizes which are less or smaller than 500 pixels. ठीक है. इधर भी सेम सिंटेक्स है तुम लोग का, like this, similar, at media screen, and instead of max width you have to simply write min width, okay. min width कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, 500, 600 पिक्सल, 700, एनी वैल्यू. इसका मतलब समझाएगा कि इधर मैं जो जो CSS सिलेक्टर्स डालूंगा ना, कंटेनर 1, कंटेनर 2, whatever CSS styles rules that I apply here, ठीक है, they will be only applied if the screen size is greater than 600 pixels, ठीक है. अगर 600 पिक्सल से छोटा है screen size, then this will not work, okay. इसके अंदर मैंने जो जो CSS का स्टाइल लिखा है, none of them will work if it is less than 600 pixels. So we can put a restriction like this, that this style should work only if it is greater than 600, and this style should work only if it is less than 400. So you can specify this kind of rules, okay. So these rules are called media queries, okay, CSS media queries. Now you can also use multiple of them. इधर मैंने एक ये specify किया है, insert. We can use multiple values. तो not only one, दो तीन भी specify कर सकते हो, like this, at media screen, max width 700, max width 400, like this. You can mix and match, you can combine, okay. You can use any one of them, and 2-3 times you can use. Suppose 700 से नीचे के लिए इतना होगा, 400 से नीचे के लिए ये सब होगा, like this, huh? Which will help you to handle various screen sizes like tablets, phones, desktops, ठीक है. So like this. Let me mention the common screen sizes. Common screen sizes for web development. 1 minute. हाँ, ऐसा गाइड है बेसिकली. मोबाइल फोन्स का कितना स्क्रीन साइज होता है, डेस्कटॉप का कितना स्क्रीन विड्थ होता है. कॉमन बूटस्ट्रैप, ब्रेक पॉइंट्स, ब्रेक पॉइंट भी बोलते हैं, बूटस्ट्रैप में भी है. हाँ, बूटस्ट्रैप में भी रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग को स्टडी करना पड़ेगा. स्क्रीन साइज, इधर स्क्रीन देना पड़ेगा. 1 minute. Used by Bootstrap. So इधर मैंने कॉमन स्क्रीन साइजेस मेंशन करके रखा है, यू कैन चेक आउट लेटर इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है. जैसे डेस्कटॉप लार्ज स्क्रीन साइजेस
कितना होता है, लैंडस्केप फोन्स में उतना होगा, टैबलेट्स के लिए उतना, ठीक है। फिर लैपटॉप्स लार्ज डेस्कटॉप्स उसके लिए 1200, एक्स्ट्रा लार्ज डेस्कटॉप 1400 पिक्सल, ऐसा हम लोग को रेस्ट्रिक्शन लगा के इधर सीएसएस को लिखना पड़ता है, ठीक है। इस सिंटेक्स में कुछ इश्यू है क्या, क्वेश्चन है दिस सिंटेक्स, एनी क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन नहीं है ना इसमें सिंटेक्स में? नहीं, वो although वो CSS जैसा ही है, राइट? द सिंटैक्स आफ्टर पेस्टिंग हाँ द थिंग। हाँ हाँ हाँ, यस यस, सीएसएस जैसा ही है, Yeah. सेम इधर सिलेक्टर्स को लिखना पड़ता है, लेकिन बस एक रेस्ट्रिक्शन जैसा लगा दिया, जैसे हम लोग इफ कंडीशन लगाते हैं ना, इफ कंडीशन प्रोग्रामिंग में, जैसे इफ कंडीशन के अंदर जितना कोड Yes. रहेगा दिस विल ओनली रन इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सिमिलर हियर आल्सो, इफ द स्क्रीन साइज कंडीशन इज मैचिंग, बेसिकली अगर 700 से नीचे है इन केस ऑफ मैक्स विथ, तो ओनली इन दैट केस दिस सीएसएस सिलेक्टर्स विल बी अप्लाइड, लाइक दैट। और इसके बाहर जो सीएसएस सिलेक्टर रहेगा, द सीएसएस सिलेक्टर्स आउटसाइड, they will act for all the screen sizes, okay? The css selectors outside any media query will be applied always for all screen sizes. जैसे हम लोग का अगर कुछ कोड है directly inside the script tag, it will directly run, right? It will not run based on any condition, just like that. So we have been writing our css selectors outside, okay? Directly we have been writing inside the style tag, or maybe in external css हम लोग क्या करते हैं, .css फाइल सेपरेट बनाते हैं, फिर उसमें डायरेक्टली css कोड को डाल देते हैं। सो इन दैट केस ऑल दिस कोड सीएसएस कोड हर स्क्रीन साइज में अप्लाई होगा, ठीक है। बेसिकली कॉमन सीएसएस स्टाइल्स जो तुम लोग को एवरी स्क्रीन साइज में चाहिए वो सबको बाहर लिखो, एंड दोस स्टाइल्स व्हिच शुड बी ओनली अप्लाइड टू पार्टिकुलर स्क्रीन और पार्टिकुलर डिवाइसेस, देन अप्लाई देम इनसाइड मीडिया स्क्रीन, ओके। नाउ लेट अस यूज देम, ठीक है। लेट अस कम हियर इन आवर So कोड। Bhargav, हाँ हाँ, यस यू कैन आस्क। here you're stating that max width is 700 pixels, right? Yes, so it means whatever style is this inside, So, yeah, maximum till 700 pixel it will be applied, okay, from 0 till 700, okay. maximum And is 700 there pixel any तक। value of that at the rate media screen and nothing? Is that has to be mentioned before implying that Yeah, 700 yes, should be yes, of thing and course, everything? yes. This is the syntax. You have to follow as it is in the syntax. You cannot specify this before or like this. It will be wrong. So first this has to come, then you have to write screen and the maximum width you have to specify. Just this line, you have to remember this. At media screen and max width like this. So you can have various values Sure. like this. Huh? In case of min width, it is reverse. In case of min width, what happens? So the screen size has to be minimum that value, particular value which you have specified for this to be applied. So once it satisfies the minimum width, okay, or equal with minimum 600 equal or greater, only then these styles will be applied. So let us check. So first, okay, let us check now. This, let us come to our code. Let me open this. Right click, open browser is not installed. We'll also have class for VS Code, but for now, you just code on VS Code. Whenever you practice coding, whenever you try to create any website using CSS, HTML, JavaScript, just do in VS Code for now so that you can get familiar. एक site है actually. This one, this site is not responsive. Huh? This website is not responsive. Just open this on phone if you can. मैंने Can you send the URL? yes, I've sent the URL on our group chat. Just open this website on phone. You will find out that website is not responsive. It does Okay. not look good on phone. It looks like desktop. हृदय खुली सावासन. You have to basically zoom and scroll if you want to read something or anything at all. And then the second link I sent is an example of responsive website. How it looks good on phone. Okay.
Okay, so it adjusts accordingly, right? Yes. On desktop it comes properly, on phone it comes properly. Okay. But then do you have to keep in mind some elements, like for example for phone, or you can just like do you have to No. keep something in mind while Look, like uh, developing or something? the first mistake that this website has done, they have not added meta name viewport. Okay. Meta name viewport is not added. This is the first mistake. Without this, what happens? The viewport is considered as the desktop. Okay. जैसे हम लोग गूगल में डेस्कटॉप साइट क्लिक करते हैं ना, देन इट लोड्स द डेस्कटॉप लाइक दैट. व्यू डेस्कटॉप साइट बोल के हम लोग का गूगल क्रोम में एक ऑप्शन रहता है, व्यू द डेस्कटॉप साइट. डेस्कटॉप साइट क्लिक करने से डेस्कटॉप में जैसा दिखाई देता है वैसा आता है. Same happens whenever Yes. you don't use whenever you don't use meta name viewport content equals to with device it, क्या होता है, डेस्कटॉप साइट by default load होता है. That's the problem. So we don't want that. We want it to be able to adjust to the phone screen size. So that's why it is mandatory to use this one, so that it works properly on desktop as well as on phone. Otherwise, let me type. Read the difference to দেখা পাইছা ন লিংকত फोन চাইছা নে? Also. ओके. तो फर्स्ट एग्जांपल है तुम लोग का रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का, सॉरी नॉन रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, जिसमें ये सब कुछ भी यूज नहीं किया, नन ऑफ द रूल्स फॉलो, बिकॉज इट इज अ वेरी ओल्ड वेबसाइट. इट वाज डिजाइन्ड अर्ली टाइम एंड नाउ दे हैव नॉट अपडेटेड एनीथिंग. सो उस समय का ही मे बी 2010 2011 उसी टाइम का चीज को ही रखा है अभी तक भी. दे हैव नॉट अपडेटेड एनीथिंग. सो दैट्स द प्रॉब्लम. दे हैव नॉट यूज एनी मॉडर्न सॉल्यूशंस. That's why it's hard to navigate on a website, and we don't want the users to have this bad experience. So otherwise, it will be rendered as a desktop site by default. तो ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इसको लगाना ही चाहिए. एंड आफ्टर दिस तुम लोग को ये CSS मीडिया क्वेरी यूज करना चाहिए. इन एडिशन टू बूटस्ट्रैप का भी एक्स्ट्रा आता है, ग्रिड का रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन. बूटस्ट्रैप मतलब यूज करना ही पड़ता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर आवर वेबसाइट लेआउट. ठीक है. तो ग्रिड कॉलम्स का भी रेस्पॉन्सिव वो आता है क्लासेस. सो आई विल टीच यू. दैट ऑल कम्स अंडर द रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन टॉपिक, रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग. ठीक है. सो हाँ, सो रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग process of look good on various screen sizes. तो एनी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. यू हैव टू यूज मीडिया क्वेरीज फॉर रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग. बूटस्ट्रैप में भी बहुत सारा मीडिया क्वेरी ऑलरेडी है. बूटस्ट्रैप इज मोबाइल फर्स्ट रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग फ्रेमवर्क. तो उसमें बहुत सारा होता है. तो एनी क्वेश्चन पूछ सकते हो. This is the syntax already given. I am downloading and sending this. प्रशांत को समझ में आया? Yes, bro. ओके. तो दिस इज इम्पोर्टेंट ना, इसको मतलब. और जब हम लोग क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हैं, वी ऑलवेज क्लाइंट ऑलवेज एज्यूम्स दैट द वेबसाइट विल बी रेस्पॉन्सिव. सो यू कैन आल्सो मेंशन आई विल क्रिएट रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन फॉर वेरियस स्क्रीन साइजेस. ऐसा इट्स अ प्लस पॉइंट जब डॉक्यूमेंट बना के दोगे क्लाइंट के लिए. ठीक है. सो व्हाट आर द फीचर्स दे विल बी इंक्लूडिंग इन योर वेबसाइट, सो वो सब इट विल बी रेस्पॉन्सिव. बेसिकली इट लुक गुड ऑन वेरियस स्क्रीन साइजेस. जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कॉटन यूनिवर्सिटी, इसको मैंने छोटा किया तो इट्स adapting itself properly. So it's looking good also on phone. But this website, non-responsive website, the example which I sent you, इसको मैंने छोटा किया तो इसको मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है. I am having to scroll this like this. स्क्रॉल करना पड़ रहा है. ठीक है.